Hi guys, I'm at NIBM college, and trust me, what I like about the college, number one is the campus, a beautiful campus. So if I show you around where we are sitting, and especially coming from Bombay, this is like a paradise mein aana hota hai. So always come and stay there. So if you show the campus, and we got a chance to talk to students as well who got 97 percentile in ZAT. So about their story and what to do, especially in the last 30-25 days, so that I can also clear and score well in ZAT. 97 percentile in ZAT, and भाई का verbal में 99 है, इनका quant में 99 है. तो what was your strategy we want to talk about? Last 30 days we have remaining for ZAT exam, 30 minutes to 25 days. And everyone start preparation for the ZAT after the CAT exam get over. आपने वही किया था. Yes. तेल की शीशी देखने के बाद. Yes sir. So how ZAT came into picture? वो तेल की शीशी start करते हैं. So I normally do that after every CAT exam. I normally show तेल की शीशी के भाई तेल नारियल तेल बहुत काम आया होगा. हाँ sir. हाँ. So उसके बाद what you went through and then how ZAT came into picture? So sir, basically after CAT, I thought my dreams are for MBA schools are shattered. But then I got to know about ZAT exam, and I thought I should give it a try. So and I got to know that there are many good colleges through ZAT. So and the syllabus is also same, only the format is different. Correct. So basically I started when I recovered from that CAT shock trauma. Then I thought I should give ZAT. For so 1 month was remaining. 30 days were remaining for the ZAT. So I started giving mocks. So how many mock you recommend? Last 25 days कितने mock दिए जाए? I means you can give 10, 7, more than enough. 10 is more than enough. 10 should be a target. And if you can't give 10 mocks, at least you should give 6 to 7 mocks, and you should solve previous year papers. आप 10 बोलोगे तब जाकर साथ देगा. 10 ही बोलो. ठीक है. Okay, same for you as well. How? And we'll talk about one by one. Okay. Hello sir. Hi. So how ZAT came into picture? Sir, actually I missed my CAT deadline. I couldn't apply for CAT. Okay. And plan was to go for MBA. So only option I had was ZAT and other exams. Other exam, right. So I gave ZAT, and my quant, being an engineer, quants was strong. So yeah, only PYQs. And PYQs. तो पिछले last 5 साल का PYQ कर लूँ तो मेरा काफ़ी हो गया. काफ़ी हो गया, और उसका अच्छे से एनालिसिस. If I look at CAT exam and PYQ की बात की जाए तो if you have given CAT, maths हो चुका है काफ़ी हद तक. जी. Verbal में काफ़ी कुछ अलग आता है. We'll talk about that verbal section. And the logic is totally new because PM section CAT में है ही नहीं. So we'll talk about that as well. So 5 साल का अगर PYQ कर ली जाए तो that's more than enough for that. ठीक है. और इसका वर्बल थोड़ा कैट से अलग है. एनालिसिस अबाउट समथिंग, मॉक एनालिसिस, पीआईक्यू एनालिसिस करना है. पीवाईक्यूज बस करके कोई फायदा नहीं, मतलब मार्क्स आ गए, कम आए, ज़्यादा है, बट उसका कहाँ गलती हुई, उसका एनालिसिस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी आई सजेस्ट. करेक्ट. इफ आई ऐड वन लाइन टू दैट कि अगर आप पीवाईक्यू या मॉक दे भी रहे हो, उसके बाद आइडेंटिफाई वन टॉपिक ऑफ इंप्रूवमेंट आफ्टर एवरी मॉक. वो इंप्रूव कर लो. तुम्हारा 10 मॉक भी दिया तो तुम्हारे 10 टॉपिक इंप्रूव हो जाएंगे रातों रात. अच्छे से. राइट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट DM, because the moment I talked to him, the first thing he said was कि DM संभालो बस. Yes sir. The main thing is there is a main difference between CAT and ZAT is that DM section, decision making section. Correct. So decision making section plays a vital role in your ZAT score. So you need to clear DM section also. So when we talk about the DM section, उसका पढ़ना कहाँ से? Sir, I think the PYQs are more than enough to study for DM section. Correct. Last 5 साल का 10 साल का भी कर लिया. हाँ 10 साल का भी कर लिया तो is more than sufficient. 20 क्वेश्चन पर ईयर, तो 5 साल का मतलब 100 क्वेश्चन. हाँ 200 क्वेश्चन बहुत हो गया. उतना भी नहीं हो पाएगा यार, लोग उतना नहीं कर पाते हैं. So that's more than sufficient for you. So when we move to verbal and quant, and both of you scored very good marks in both the areas. So quant के लिए आप क्या एडवाइस दोगे? क्वांट के लिए कैट एग्जाम में ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ा होता तो मैं ZAT में नहीं आता, वो अलग बात है. अच्छा किया रहा था. तो what extra to do? Sir, nothing extra. Just you have to means some questions are different. So I'll suggest just solve PYQs. Okay, PYQs and mocks are more than enough to improve your quants. Correct. And just have to go through all the basics. Yeah. Just go through the basics. area which I've ignored in CAT. Arithmetic भर के आता है. At least you must have now known that which is my weak point. मतलब which part of quant is my weak point. Correct. So that you can improve in for the ZAT. Correct. That much is enough. Correct.
So what will be your advice for quant and verbal, whichever you want to talk about starting? सर आई टॉक अबाउट वर्बल बिकॉज माई स्कोर वॉज रियली गुड इन वर्बल. तो वर्बल में इन जैट देयर इज डिफरेंस फ्रॉम कैट कि यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग एक होगा एंड पोएम्स होंगी. तो फॉर पोएम्स वी जस्ट नीड टू प्रैक्टिस क्योंकि वो इट इज़ अ वेरी डाइसी एरिया. Like RC only, but in अलग type of हाँ, लैंग्वेज का थोड़ा ही होता है. Correct. And for logical reasoning, we can even practice lesser questions, but the logic has to be solid. तो exact reason कि वो option क्यों choose किया है and why not other options, that it has to be crystal clear in our minds. Correct. So if I kind of summarize, तो पिछले 5 साल 10 साल का पेपर कर लो यार, more than sufficient. More than 10 sufficient. mocks, 10 last year paper, enough to get 99, 97 percentile that you end up in a good college. Yes, sir. So moving to the last part, why NIBM? How NIBM came into picture? So as I was my bachelor's is in bachelor's in accounting and finance, and I was searching for the best finance institution, and I got to know about NIBM. So means it is an apex institution for finance. So it just clicked my mind, and I am here now in Nice, NIBM. very good. Sir, I'm a mechanical engineer, so I was really confused कि कौन से फील्ड में करना चाहिए. तो इंजीनियरिंग हमें करनी नहीं है, हाँ. फाइनेंस में आता नहीं है, तो क्या किया जाए तो लाइफ क्या में? किया जाए वही. तो फ्रेंड्स से जब बात हुई तो मार्केटिंग, फाइनेंस, HR ये सब डिस्कस हुआ. तो एक्चुअल काम कैसा होता है उन लोगों से बात की तो पता मतलब आई केम टू अ कंक्लूजन कि फाइनेंस इज़ मोर ऑफ अ लाइक स्टूडियस काइंड ऑफ अ पर्सन के लिए अच्छा है. सो आई एम मोर ऑफ More of दैट काइंड ऑफ studious, पर्सनैलिटी. good. सो आई चोज फाइनेंस बिकॉज Great. मार्केटिंग जैसा एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ या Great. HR जैसा दिमाग नहीं चलता. तो Great, but being an engineer, is it okay to do finance? मतलब, are you comfortable? But was there any problems? सर बीइंग एन इंजीनियर इट्स एन एडवांटेज टू सम एक्सटेंट. मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा टफ जाएगा, सब्जेक्ट्स अलग है, बट बाद में जब मैथ्स आता है तो एडवांटेजेस है. मतलब मैं तो नॉर्मली कहता हूँ जितने इंजीनियरिंग कर ली कुछ भी कर लेगा. हाँ, actually. इंजीनियरिंग छोड़ के हम कुछ भी कर सकते हैं. So great, yeah. Thank you very much for talking to us. Thank you, sir. Thank you, and all the best. थैंक यू. Thank you.